One answer is to talk in favor of you. Sir, I am always keeping my target before me. I plan my strategies. I guide my people. I motivate them. I follow up those people. So I try to achieve results. That is why my results are high. You can tell that and stop with that instead of telling negative points of others. That is one way. The Yes, sir. other point is you can say, sorry, sir, I can't answer this. It differs from individual to individual depending on his commitments and also ability to put in. So that is what it is. Acha, let me ask a serious question. Hmm. Development officers, are you expected to go to LIC office every day? Yes, sir. अच्छा, रोज जाना पड़ता है? Yes, sir. ये तो हम नहीं हम सोचते थे आप लोग कोई कस्टमर को विजिट करना है ऑफिस को जाना जरूरत नहीं ऑफिस को भी जाना पड़ता है यस सर, ऑफिस को भी जाना पड़ता है. ठीक है थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन या the question you have sent why so many LIC people want to come in Bank of Baroda. What is the answer you will give me for this? सर, I decided to give that I am not able to tell about others, but for me, I have sales experience in LIC and also having banking experience in Bank of India that I can use both in Bank of Baroda for little liabilities, and I want to grow personally and professionally. That's why I'm coming to Bank of Baroda. That is your answer. My Yes. answer is um, see, earlier such opportunities were not there in the banking system. Only in the recent past, they have Hmm. started recruiting people at a higher level, scale 2 and 3 levels. Yes, And that is also right. and once that opportunity comes, the LIC people are more into marketing and sales, more suited for this job. That is why they are coming. Hmm. Okay, good. That is my Yes. answer. It can be different. This is also good, sir. Yeah. Next question. But What sir, is, le- yeah. some of the- my colleagues they answered that उनको ऐसा लगा कि जो प्रमोशन की जो पॉलिसी है ब्रांच हेड के लिए उनको अभी और 4-5 इयर्स वेट करना पड़ेगा, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्टली स्केल 2 है, सो दैट्स व्हाई पीपल कमिंग. Yeah, that is also one thing. Yes, that day, I think with Jitin and all, we were discussing like that. Jitin was बट telling सर, me that it will हाँ, take more number of years for me to get promoted in LIC. Whereas यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइन करने से हमको होप लगता है हम बड़ा बड़ा पोस्ट को जाएगा ऊपर. बट सर आज ये इंसेंटिव वाला भी एक क्वेश्चन पूछा था मेरे कलीग को, दैट इट इज द बेस्टेस्ट जॉब, एलआईसी की Yeah, जॉब जो है उसमें आप इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हो, देन correct, व्हाई यू वांट टू लिव. correct. In fact, I asked you the same question. हम्म. First day when you came or second day, I asked this question. Because honestly speaking, I know a development officer of LIC. He is only 11th standard passed in those days. ओ. He is now crorepati. He is now Hmm. No, crorepati. he That is, he must be sir agent. From agent yeah. line he must be No, he was, recruited. sorry, he is only an agent, not a Yes. development officer. He is an agent. And this LIC agent, is very clever. What he did, he started a finance company. So not only was he issuing policies to people from LIC in those days, this type of online loan taking, Hmm. etc., were not there. So he used to take the policies, give loan, get it assigned, charge higher rate of interest. He developed a business like anything. He started a business with his own brother, and he used to bring chartered accountant as his main person to run the company and all. Whenever he takes somebody for job, he will take all the certificates from him, keep it with him. Hmm.
That is how he was succeeding. Later on, he started giving loan against properties at higher rates. So the दूसरा बात है, that is, he is on a higher level. That is, even as an agent, you can be a successful man, provided one can ensure doing things on a very active scale. But that man is doing something legal, something illegal also, or something which is commendable. But Hmm. generally, development managers, there are some who get monies in lakhs also. It depends. Hmm. But other things remaining constant, a job with an incentive is a good motivator for an individual to work harder. I don't know whether you follow what I say. For example, why do I work more? I work more because I do work for me, not for Yes, others. sir. So that is the thing. Taking that into consideration, a development officer's job is also more suited for motivation. Anyhow, let not go But further on sir, this. how to answer for this kind of question? That is one. No, no. Whatever that comes to your mind, you can answer. One, you thought my promotion will be good. Why everybody is coming? Maybe this is because it's a good opportunity for them. And not only that, once this opportunity is lost, their age will cross. So they may not Hmm. become eligible for future appointments. ऐसा भी हो सकता है. Hmm. Yeah. So don't worry. There are no the correct answers for this. Okay. Such questions are only stress interview questions. Hmm. Next question. Current account compliance below 15 lakh GST. I don't know about it. Mhm. Current account compliance. So They are all, actually, no, no, one of current my account colleague got this compliance. question. If you ask me current account compliance, I will say number one, you have to fulfill KYC formalities, Hmm. and you have to get the board resolution for the passing or opening of the account, and give proper documents like memorandum and articles of association, etc. This is what I know. Okay. But now here you are telling GST number is not mandatory for less than 15 lakhs. I don't know. Not 15 lakhs. Actually, It is 20 lakhs now. okay. Actually, my friend answer about the GST registration. So the interviewer cross question that below 15 lakh there is no need for GST registration. Oh, correct, correct. 1 minute. I think even that is not They correct. Let me they search. are today they are countering whatever the answer we are giving. So the interviewer are countering this. Mm-mm. GST, GST registration is wrong. GST Okay. is mandatory if turnover exceeds 40 lakhs for goods or 20 lakhs for services. Certain businesses register under GST regardless of turnover. I am giving this. I know this answer. 20 lakhs. I was thinking 20. Here I am Okay. corrected as 40 lakhs when it is going to be goods. Okay. Next question. और सर Uh, इसमें करंट अकाउंट में थोड़ा जियो टैगिंग और कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं क्या कंप्लायंस Geota- में geotagging means कस्टमर जियो का टैगिंग लोकेशन में सर। customer location. एक्चुअली सर अभी जो प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट ओपन हो रहे हैं करंट अकाउंट उसमें कस्टमर के जो बिजनेस का प्रेमाइसिस है उसका फोटो कैप्चर करते हैं, तो जो लोकेशन है वो कैप्चर Hmm. होती है, उसको जियो टैगिंग कहते हैं। Oh, oh. हाँ तो I don't know about this. अच्छा ये अच्छा ये very ये good. प्राइवेट प्राइवेट बैंक में ही होता है सर ज्यादातर। अच्छा very good. जियो टैगिंग भी करना तो कर लीजिए. But is there a condition that the customer should stay within so many kilometers from the branch?
पंकज। सर एक्चुअली उसकी कोई कंडीशन नहीं रहती है। कई बार क्या होता है कि जियो टैगिंग वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए भी कई सारे लूप होल्स होते हैं सभी एप्लीकेशंस में। तो वो फिजिकल कर लेते हैं, जियो टैगिंग नॉट कैप्चर करके एक अप्रूवल लेके ये सब चीजें कर लेते हैं। नो नो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं मेरा है वो। क्वेश्चन आपने आंसर नहीं करते। इज देयर अ कंडीशन, आई सपोजिंग आई स्टे एरिया इन बाउंड चेन, होगा ना। या यस 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 यस। एरिया इसमें बाउंड होता ब्रांच की जो विसिनिटी का रहता है ना सर, उसके उसमें रहना चाहिए, लाइक है? 50 वेरी गुड। किलोमीटर के अंदर। हम्म। अच्छा, supposing Ambani comes and gives his account, will you say no at in Tamil Nadu for a deposit is going to bring 10,000 crores? Will you say no? नो, वी ऑब्वियसली विल नहीं ओपन चाहिए। सर। There, obviously, you will open. It depends on the amount. Then you maybe you have to take permission from your boss or inform him about that. That's what I will say. Good. Next question, FD versus mutual fund. How will you canvas it? These are all faltu questions. I see if the preference of customers are different. If you talk to a Buddha man like me, I will always go for only FD. Even if you give 20% in what is that mutual fund, I am not going to come there. So it is the preference of the customer that determines, but to it is the duty of us as manager to brief him about various plus and minus and try to convince him to come to our fold. But on my part, I will try to convince him to come to our bank's deposits. I don't know which one is more beneficial for the bank. Is it getting commission for mutual fund, or is it borrowing money from staking money on deposit, then making loans to others? Do you get a better difference, net interest margin? I don't know. But so as an individual, I will ask him to come to our bank's funds. But if he is still willing to take risk, if it is a young man like Pankaj, he would like to go for high risk taking, then he may go for mutual fund. Okay. हाँ सर, फिर ऐसे ही सजेस्ट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमारी बैंक में ही कीजिए। Through bank, yeah. Through my या bank, kar lijiye. Good. थ्रू माय बैंक। When you go to customer, do you try to take whole investment in LIC policy? I don't understand this question. सर उन्होंने ऐसा बोला मेरे फ्रेंड को कि आप कहीं पे भी क्लाइंट से मिलने जाते हो तो उनके पास जितना मार्जिन होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का, वो पूरा का पूरा आप एलआईसी पॉलिसी में ही इन्वेस्ट कराते हो या फिर क्या करते हो? So, you mean you are asking as a depositor or as a agent? एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आप क्या कराते हो कस्टमर को, ऐसे पूछ रहे थे। They see the reality is I would like to take as many LIC policies or as much high LIC policy as possible. हम्म। But but I think you have some rules na, that if a person earns this much, his policy should not be more than this and all that. ऐसा कुछ rules होता है ना, नियम होता है ना। या वो तो होता है पर वो क्या मैंने चीज मैंने वो क्या चीज है? वो तो Supposing I earn 10 lakhs per month year, कितना तक हमारा पॉलिसी हो सकता है? सर ऐसे तो आपका 25 टाइम्स ऑफ द इनकम जनरली चेक करते हैं। ओहो, should not exceed 25. सम एश्योर्ड मतलब। ओहो, correct. Supposing my salary is only 10 lakhs and I want to take a policy for 3 crore. नो यू, पर टर्म प्लान पे डिपेंड करता है फिर। फाइनेंशियल जो आपका वो होगा अंडरराइटिंग, वो अंडरराइटर करेंगे कि 3 साल तक आपने कितना अर्न किया है। 3 इयर्स ऑफ आईटीआर चेक होंगे, फिर आपकी हेल्थ भी चेकअप होगी। Mhm. Then it is okay, no problem. बट सर Sir, मैंने ऐसा आंसर बनाया कि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे को तो मैं तो ऐसा ही चाहूंगी कि
जो पार्टी इन्वेस्ट करना चाहती है वो पूरा एलआईसी में हो, फिर मैं उसको एलआईसी में डाइवर्स कर सकती हूँ। लाइक उसकी फाइनेंशियल नीड्स होती है उसके हिसाब से, लाइक कुछ यूलिप में डाल दूंगी, कुछ चाइल्ड प्लान्स में डाल दूंगी, उससे ऐसे बाइफरगेट करके मैं डाल सकती हूँ। बट Problem उसके in, लिए in मेरे को no no the problem in कस्टमर को कन्विंस investing करना no पड़ेगा। no no problem in investing in LIC is money is not withdrawable at short notice. बैंक में होने से तो साथ साथ मेरा अकाउंट को अभी क्लोज करके जितना भी चाहिए हम ले सकते हैं। यस सर। जैसे जैसे जगह पर भी हम उस जगह पर हम ऑनलाइन में जाके क्लोज करेगा, एटीएम पर जाके पैसा ले लेगा। तो इसलिए यस सर। पूरा पूरा पैसा LIC में डालना अच्छा नहीं है। यस सर, बट मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ऐसे मार्केटिंग स्किल्स चेक कर रहे हो कि आप कस्टमर के साथ जाते हो तो अपना प्रोडक्ट पिच करते हो या किसी और का भी सजेस्ट करते हो, मुझे ऐसा लगा Yeah, कि yeah. वो लोग ऐसा So कुछ। here, whatever answer you give is okay. It depends on the good impression you create in the minds of the interviewer. हम्म। Next तो question. मैं तो BOB मैंने जो finance. मैंने जो BOB बनाया उस बोलिए। मैंने जो बनाया कि उसकी फाइनेंशियल नीड उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगी कि मीट हो जाएगी, उस हिसाब से मैं पूरा बाइफरगेट कर दूंगी। तो वो कैसा रहेगा, सही रहेगा आंसर? I don't know. I don't know. That's what I am telling. क्योंकि See, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला no, no. कि जैसे अभी हमारा तमिल में एक फ्रेज है, you want to put the blanket first and then lie down, और lie down करने का बाद में ब्लैंकेट डालना चाहते हैं, दोनों एक ही है। ऐसा भी आपने जो आंसर देते, all the answers are same only. The positive impression you create in your answers is what is more relevant. फिर मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला कि नहीं, हम डाइवर्सिफाई करने को बोलते हैं उनको, थोड़ा एफडी में रखने को बोलते हैं, थोड़ा एलआईसी I पॉलिसी में I will बोलते हैं। also support. I will also support that. अच्छा। Because for the simple reason, if that fellow wants money overnight, he cannot come and ask you to give the money. You will be sleeping at home. He cannot come and knock the doors and ask, अरे बाबा हमारा पूरा पैसा आपका पास दे दिया, अभी मेरा बीवी को तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा पैसा चाहिए, जाओ जल्दी दे दो। Can you हम्म। give him money? No. हम्म। So I would be of the, I will ask him to choose percentage of investment he can spare for LIC and amount he wants for personal needs in his bank account and go with that one. That is the best suggestion. Then Bank of Baroda financials तो जानते हैं. Then NII कितने percentage बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखा उसका आपने? देखा नहीं? NII. Did you see that? Acha, she has gone. Mayuri. Suman Babu. Suman Babu, you are appearing for which interview? Suman Babu. Suman Babu, you are appearing for which interview? Sir, it's सॉरी सर। scale 3, sir. The interview Huh? not scheduled yet. Pardon? It's scale 3. You are appearing for scale 3. You are joined today only. I just want to see, sir, how the No, discussion is no, no. happening. You joined today only, or when did you join No, no, us? no. No, sir. Last, I think 2 weeks back only, but I couldn't get time to join every day. Which So bank are today, you working? Which bank are you working? HDFC Bank. HDFC Bank fellows, you give your life to the bank, but you can't. That much I No, know. sir. You are Actually, too much my is branch being is asked. little far from my native. I mean, my branch is little far from my home. हम्म, So आना generally, I जाना में reach my. आना जाना में Yeah, समय ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं. yes. Good. Now next question, Mayuri, you have anything to say now immediately? नो सर। Now NII कितने परसेंटेज है देखा आपने? नहीं सॉरी, थ्री देखा नहीं? पॉइंट समथिंग देखा था पर भूल गई, मैं, याद नहीं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन. Net interest margin is different and they asked about some NII. नेट I इंटरेस्ट don't know. इनकम. नेट Income.
net interest income is that we have to go through the 14.8 percentage. नहीं अच्छा नहीं, it's 2.1 percentage. अच्छा, good. Whatever it is, I cannot reach the website from here. आप देख लीजिए उसको. So, from press release, I made Yes, printout of that. exactly. Then next one, MOA, AOA क्या होता है? आप बोल सकते हैं? हम्म बोलिए. सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो कंपनी होती है उसका ऑब्जेक्टिव और मोटो वगैरह लिखा हुआ होता है, उसके शेयर होल्डर्स वगैरह का। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम्म हम्म मुझे तो इतना ही लगा कि हमारा भी उतना ही लगाई. ज्यादा हम तो पढ़ा है बहुत दिन पहले. अम, नहीं, मैंने जस्ट सर्च किया था एमओए, तो मुझे तो इतना ही समझ आया। अच्छा, आप आर यू सीइंग नाउ ऑन द स्क्रीन? अभी देखिए. नो सर। हाँ, अभी आ रहा है कुछ। प्लीज रीड. इट्स लोडिंग, ओके। In India, the Memorandum of Association and Article of Association are crucial documents for company registration. The MOA outlines the company's fundamental details, including objective, scope, and operation and relationship with shareholders. The Article of Association, on the other hand, defines the internal rules and regulation governing the company's management and operation. मैंने भी इतना ही पढ़ा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Okay. Purpose of the MOA. The MOA is primary document that establishes the company's constitution, defining its objective, scope of activities, and relationship with shareholders. Key details, it includes clauses related to the company's name, registration, office objectives, liability of members, and share capital. Legal हम्म standing. The MOA is a legally binding document that limits the company's ability to act beyond the scope outlined within it. Example, the MOA might specify that the company's primary business is manufacturing textiles and it cannot be used for unrelated activities without attending the MOA. हम्म Article of Association purpose. The AOA defines the internal rules and regulations for the company's management and operations. हम्म. No, I don't know where I left it. अच्छा, आपने पढ़ लिया उसको? Hmm. सही है. गुड. Next one, we will go for next question. What is capital gains account? It's a good question. What is, Yes, sir. because for mobilization of liabilities, this point all these days हम लोग देखा ही नहीं है. I was suggesting you to contact associations, then group of people and all that. But ye capital gains, of course, I told you about contacting the real estate agents, sellers and purchasers. Sellers को पास में आप जाने से तो आपको पैसा मिल जाएगा. And that is one. And sellers में जाने से तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स आएगा. उसके लिए वो प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने पैसा रखना पड़ता है बैंक में फॉर सम पीरियड. एंड दैट हाउ आर यू गोइंग टू कैनवास? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. डिड यू स्टडी अबाउट इट? सर, उतना तो पढ़ा नहीं, पर एक दो जो बैंक के जो थे उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि उसमें ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसमें से जो इनकम अर्न होती है वो कैपिटल गेन जो अकाउंट होता है उसमें रखते हैं। और फिर जब पार्टी वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदती है तो फिर वो उसमें ट्रांसफर कर देती है बैंक, सो दैट एग्जैक्टली. टैक्स कैन नॉट बी लायबल ऑन। एग्जैक्टली, सो दैट ही विल नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन्स टैक्स. मान लीजिए बट सर, आप ये तो वन आप काइंड ऑफ, मान लीजिए, ये लीगल है क्या? it is legal only. मान लीजिए you have bought a property for 10 lakhs, you are selling it for 1 crore. There is a difference of 90 lakhs plus in the price of the property you have sold. Now, हम्म after budget 2024, are you seeing on the screen? No.
नो सर। Long-term capital gains are taxed at a हाँ, flat वो पता है। 12.5% without the benefit of indexation. If the capital assets sold are listed equity shares, long-term capital gains arising of that sale is eligible for exemption up to 1.25 lakhs. Capital gains account, SBI Bank. It is the same rule in almost all the banks. You can go through your bank also. Say, sold, can you read this? Sold a plot of land. Sold a plot of land or a flat or any such property recently, you could be liable to pay long-term capital gain tax. However, if you plan to reinvest it in residential property or any other specified asset within the stipulated time frame, you can park the proceeds in SBI's Capital Gain Plus under the Capital Gain Account Scheme 1988 and be eligible to claim exemption of long-term capital gain tax on sale of capital assets. This has been there even during my times. So the thing is account में रखने से, like it can be in savings bank account or in fixed deposit account, you can keep it. You can read these features also. Please read. Adequate time to acquire the new asset of your liking. Earn interest at saving bank or fixed deposit rates as you wait. Saving bank account, deposit account A and term deposit TDR, STDR, deposit account B. Rupees 1000 in cash of cap gains term deposits. No upper ceiling for maximum balance amount. As applicable to normal saving bank account and or term deposit for respective maturities of retail and bulk deposits, no additional interest rate benefit for senior citizen or staff. The capital gain deposit scheme is operative at all branches except rural branches. Closure of TDR, STDR allowed before maturity, proceeds to be credited to capital gain SB account A only. मतलब सर इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ मिलेगा नहीं पार्टी को? Interest मिलेगा only at the rate for अच्छा, everybody. But in the case of bank staff, we are eligible for 1% more 1%. interest. That will not be allowed. In the case of retired people like me, Yes. we are eligible for 0.5% more, 5%. 1.5% more. Supposing I sell a property and I bring that money for investing in capital gains, I will not be getting the benefit of 1.5% extra interest from my bank account. तो मतलब जनरल को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये तो ज्यादा अच्छा है ना कि टैक्स भी बच गया और इंटरेस्ट भी मिल गया. या सो ये SMP ये थोड़ा पढ़ लीजिए आप बाद में, ठीक है? ओके सर. जी सर. गुड. सर बीओबी के मैं साइट पे गो थ्रू किया था तो उसमें इतना डिटेल में नहीं बताया इसके बारे में. ओके. उसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि 1988 का जो एक्ट है उसके बराबर सब होगा, पर ये सब थोड़ा ज्यादा अच्छा बताया है एसबीआई ने. इधर अच्छा दिया है, आप पढ़ लीजिए बाद में. नेक्स्ट ठीक वन. है सर. What is inflation and deflation? Inflation means too much rise in the price of goods and services over a length of time. That is, एक बार इंक्रीज होने से तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बताएंगे. एक 3 अच्छा. months, another 3 months also वो प्राइस इंक्रीज होने से उसको इन्फ्लेशन बताएगा. डिफ्लेशन का मतलब द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग डाउन ओवर ए लेंथ ऑफ टाइम. एक क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर भी वो कम हो जाता है, उसको डिफ्लेशन बता रहा हूँ. HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये मेल करता, सीनियर मेल मेंबर ऑफ इज अ कर्ता ऑफ द फैमिली. दे विल बी डूइंग बिजनेस एंड दे कैन ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस. बट आजकल बहुत चेंजेस आया है इसमें. They say even woman can be a karta and all that. So many कर्ता. things. So एल्डर many things. डॉटर कैन बी द कर्ता. Yeah, आई रेड so समवेयर. many changes have come. इसका बारे में पूरा हम नहीं जानते हैं. Difference between hypothecation and pledge. सर को Hypothecation. मतलब
Yeah, सर को पार्टनर co-par- कौन कौन होता है उसके बारे में पूछा था। co-partners are, say, the senior most member is karta. करता Others are co-partners. अदर फैमिली मेंबर्स। Yeah, other same ओके। same family members or co-partners. What is the difference between hypothecation and pledge? Hypothecation is whenever a movable property is given to the bank as security, and like a car, the possession of the same will continue to be in the custody of the borrower, but the bank will have a charge over the particular asset. In case of non-payment of the installments, bank can take possession of the property and bring it for sale under SURFACE Act. समझ गया? It should be यस over सर। 1 lakh dues. Next one, I pledge का मतलब, pledge is in the case of gold loan, where gold is or jewel is offered as security, it is retained as a security with the banker. The banker will release that security only after receiving the full amount in respect of that gold loan. Once you tell this, they will go into the question. What are the recent changes in regard to that up to 2.5 lakh loan? Loan to value 85% can be एलटीवी। 85%. That point can be told. Related to circulars of Bob current circular regarding savings, ये क्या है? ऐसा मपी क्यों पूछ रहा है? बॉब करंट सर्कुलर हमको कैसे पता होगा? यस सर। तो मैंने अभी मैं ब्रांच में गई और फिर मैं लेके आ गई। You went and asked them. दे रिड्यूस सम इंटरेस्ट रेट, तो साइड पे थोड़ा अपडेट किया है पर उतना इजीली नहीं दिख रहा था। तो फिर उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट अभी घटाया है उसके बारे में थोड़ा था। अच्छा, इंटरेस्ट रेट अभी कम हो गया? हाँ तो मॉनेटरी व्हाट पॉलिसी में जो कम हुआ उसके हिसाब से कुछ हुआ है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट कम अभी? ये अभी मैंने देखा नहीं है, मैं जस्ट अभी लेके ही आई थी शाम को। लेट मी सी। नो नो, बैंक ऑफ बड़ौदा इधर में देखने से तो आ जाएगा ना। ये दीज थिंग्स कैनॉट बी केप्ट सीक्रेट बाबा। बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट रिविजन, इधर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा इधर में नहीं आएगा जी। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड माई सेल्फ और थोड़ा लड़ाई है हम लोग। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ डाइवर्स हो गया इस समय पे, हमको इसमें नहीं आता है। समझ नहीं आया सर क्या बोल आई वॉज मेकिंग फन, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ फाइटिंग। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा ओके वेबसाइट इज नॉट कमिंग, देखो ना क्या आता है। सर, मैं फोटो खींच के आपको एक बार शेयर कर देती हूँ। हाँ, दैट कर लीजिए, कर लीजिए। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, HUF में को उस पर्सनर्स उसमें आप कौन थोड़ा कौन? मेरे को बता देना कि मैं क्या करूँ इसमें। ये बहुत सारे इंटरेस्टेड है, सब तो कैसे याद करूंगी। No, no, I want you to know what is the exact interest rate for savings account. What is the highest interest rate paid for fixed deposits? What is the ओके। highest rate paid for term RD account? Normally it used to be same. आजकल कभी कभी फर्क पड़ता है। मेरा इंडियन बैंक में भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाज 8.7, बट आरडी में 8.6 था। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट लाइक दिस, बट आजकल द 444 days deposit is carrying highest interest rate. So that one also you can see that. Okay, ओके सर। very good. Best wishes. Thank you so much. God bless you. सर Attend. 1 मिनट में ये सेंड कर रही हूँ, वो एक बार देख लो ना सर। Pardon? You want some more questions? नो नो, हाँ, ये इंटरेस्ट रेट का जो मैं सेंड कर रही हूँ वो थोड़ा एक बार, देखिए, wait a minute for 5 minutes. इफ यू हैव टाइम सर, बिकॉज मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा ही आ, परेशान कर दिया है। अभी भेज दिया, अब भेज दिया नहीं आया? नहीं, जस्ट आई एम जस्ट क्लिकिंग द फोटोज।
ओके ओके, सेंड हो रहा है अभी। भेज दिया सर अभी। बहुत दूर है जी, टेक्स टाइम टू कम। ओके। आ गया आ गया। डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट No, first one I am 3 seeing करोड़। is a revision of rates of domestic retail term deposits, NRO, NRE, etc. Residents general existing revised हमको existing नहीं चाहिए, revised only चाहिए। Resident Indian normal citizens, इसमें 181 to that is not required for us. Then what is required for highest interest rate I want? It is सॉफ्टवेयर ड्राइव here 6.6% हो गया है ना वो। हाँ, uh, अभी साइट पे तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो अभी वही दिखा रहा है, 7 ही दिखा रहा है। now it is 6.6 हो गया मैक्सिमम। हम्म। अच्छा 444 days वो वाला नहीं है वही स्पेशल है ना डिपॉजिट? सर, 4 बीओबी स्क्वायर ड्राइव या डिपॉजिट फोर फोर बीओबी फोर स्पेशल डिपॉजिट अभी 6.60। 444 days, नाउ इट इज 6.6 था, अभी कम हो गया। यस सर। अभी सीनियर सिटीजन होने से 7.10। यस। ये वाला क्या है 7.20? दूसरा वाला ऊपर में क्या दिया है? रहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन, अरे बाबा अबव सुपर। 80। या अबव 80, ओके करेक्ट। थैंक यू। ओके मौर्य सर। मौर्य थैंक यू सर। मौर्य मौर्य मयूरी मयूरी। 1 मिनट, 1 मिनट। एसबी का इंटरेस्ट दिखता नहीं है। एसबी का एसबी का तो नहीं दिखा रहा है, 2.70 दिखा रहा था साइट पे तो। एसबी में व्हाट इंटरेस्ट आता है? एसबी का शायद नहीं चेंज किया शायद। नो नो नो, चेंज किया होगा, चेंज नहीं किया तो बढ़िया है। नहीं, इसमें बट तो दे पूरा हैव सर्कुलर। इधर क्वेश्चन में ये दिया ना, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट रिविजन इन सेविंग्स अकाउंट, ऐसा ही बोला हम्म। रिलेटेड। या इसलिए चेंजेस हो गया होगा। If it was 2.75, now maybe it would have come down to 2.5 or so, whatever it is. Thank you. ओके। Best थैंक यू सर। wishes. Best ओके wishes. सर। Bye. I don't know why the बाय सर। next candidate has not come. Doesn't matter. I'll close with this. Best wishes. Please attend the interview and send the questions they are asking.